Hello, students. Welcome back to Gyanmantra Vidyapeeth Online Education. Today, we are going to revise the second unit from our main textbook, Flamingo. And the title of this unit is Last Spring. Students, in this unit, there are two different partitions, and we'll be having two different kinds of criterias and two different stories. Okay, so the first part, that is, sometimes I find a rupee in the garbage. This is the title of the first part. Okay, and the second part will be the another one. Right now we are going to revise the first part from this unit. Suppose you find any difficulty, then ask me. You can carry your textbook with you, Flamingo. Okay, so let's start the discussion. Here, from the title itself, we can come to know that sometimes I find a rupee in the garbage. It means a person is there who is finding a rupee coin in the garbage. It means it is discussion about finding money from the garbage or finding something else also that is valuable, worthy enough from the garbage. So, what is that, and who is this fellow is trying to find out this kind of valuable things from garbage? So, let's see what is given here. Let's start. Why do you do this? I ask Saheb, whom I encounter every morning, scrunging for gold in the garbage dumps of my neighborhood. सो हियर आई मीन्स द राइटर. यहाँ पे जो आई जब भी यूज़ हुआ है, सो आई का मीनिंग हम राइटर जो है वो बोल रहे हैं, वो अपने बारे में बात कर रहे हैं. सो वो हम इसका मीन आउट करेंगे दैट आई आस्क साहब whom I encounter every morning scrunging for gold in the garbage dumps of my neighborhood. Why do you do this? Means the writer finds every day this person finding समथिंग एंड स्पेशली द गोल्ड इन द गार्बेज. जो राइटर है वो एवरीडे ऐसे फाइंड करते हैं कि ये जो साहब है, इस बॉय का नाम साहब है. सो साहब एवरीडे अपने उनके नेबरहुड एरिया में जो गार्बेज होता है उसमें वो गोल्ड फाइंड करने की हमेशा से ऐसे कोशिश करता रहता है. साहब लेफ्ट हीज होम लॉन्ग अगो, sat amidst the green fields of Dhaka. His home is not even a distant memory. There were many storms that swept away their fields and homes. His mother tells him. That's why they left, looking for gold in the big city where he now lives. So here it is also mentioned that Sahib left his own home long ago. ऐसे बहुत टाइम पहले ही उसने अपना घर जो है वो अपना जो एरिया पहले वो रहता था वो उसने छोड़ दिया होता है. काफ़ी उसमें टाइम अभी लगा हुआ होता है. Sat amidst the green fields of Dhaka. This his home is not even a distant memory. उसे अच्छी तरह से याद भी नहीं है कि वो कैसा था, वो जो घर है वो. There were many storms that swept away their fields and homes. His mother tells him that's why they left, looking for gold in the big city where he now lives. Because of storms and heavy rains and all, the fields and homes, the things were destroyed, and that's why they shifted in the search of gold. So now here they are living. वो स्टॉर्म जो होता है उसकी वजह से और सभी चीज़ें जो होती है, फील्ड्स है और जो उनका घर था, वो सारी चीज़ें ऐसे डिस्ट्रॉय हो जाती है, बहुत ही तरह से बिगड़ जाता है सब कुछ. और इसलिए वो अभी गोल्ड के सर्च में, साहब और उसकी फैमिली जो है वो अभी गोल्ड के सर्च में अभी इस जगह पे रहने के लिए वो लोग आ गए हैं इन दिस बिग सिटी. वो काफ़ी बड़े शहर में अब यहाँ पर वो रहने के लिए आ चुके हैं सो दैट दे कैन फाइंड गोल्ड मोर, ताकि उन्हें अच्छा अमाउंट में गोल्ड मिल सके. इसलिए
Next paragraph. I have nothing else to do, he mutters, looking away. Go to school, I say, glibly, realizing immediately how hollow the advice must sound. There is no school in my neighborhood. When they build one, I will go. See the I have nothing else to do, he mutters, looking away. Go to school. See, here it is the conversation between the writer and Sahib. Sahib is speaking, he is saying that actually he has nothing else to do. उसके पास करने के लिए कुछ और है ही नहीं. तब राइटर उसे ऐसे एडवाइस देते हैं, उसे ऐसे सजेस्ट करते हैं दैट ही शुड गो टू स्कूल. उसे स्कूल जाना चाहिए, उसे स्कूल पे जाना चाहिए. But Sahib very carelessly speaks that there is no school in his neighborhood area. When they are going to build one, then he'll definitely go. उसके जो neighborhood area है, उसका पड़ोस का एरिया है, आसपास का एरिया है, उसमें कोई स्कूल ही नहीं है. जब वहाँ पर कोई भी स्कूल ऐसे बिल्डअप होने वाली है तभी वो वहाँ पे ज्वाइन कर देगा. अभी तो वो नहीं जाने वाला क्योंकि उसके नेबरहुड एरिया में ऐसा कोई स्कूल है ही नहीं. दैट्स वाई. Let's proceed further. Next page. If I start a school, will you come? I ask, half joking. Yes, he says, smiling broadly. A few days later, I see him running up to me. Is your school ready? It takes longer to build a school, I say, embarrassed at having made a promise that was not meant. But promises like mine abound in every corner of his bleak world. Here, the writer just the writer is trying to make the kind of promise means that's not the serious matter, or the person is not the writer is not that much serious as well. जो राइटर है वो इतने सीरियस भी नहीं होते, पर उन्होंने ऐसे ही ऐसे पूछ लिया. इफ़ सपोज आई एम गोइंग टू बिल्ड अ स्कूल, सपोज आई स्टार्ट अ स्कूल, विल यू कम? अगर मैं स्कूल स्टार्ट कर लूँ तो क्या तुम आने वाले हो, तो क्या तुम ज्वाइन कर लोगे? एंड देन साहेब रिप्लाइज दैट येस, और वो ऐसे बड़ी स्माइल उसे देता है. और कुछ दिनों के बाद वो उससे ऐसे पूछ भी लेता है कि आप वो जो स्कूल बनाने वाले थे वो रेडी हो गया क्या? एंड देन the writer replies that actually it takes time. It takes long time to build a school. कोई भी स्कूल होता है वो ऐसे स्टार्ट होने में, वो बनने में काफ़ी टाइम लग जाता है. और फिर उसे रियलाइज़ भी हो जाता है कि उन्होंने ऐसा प्रॉमिस कर दिया था जिसका कोई मीनिंग ही नहीं था. वो बिल्कुल ही पूरी तरीके से वो मीनिंगलेस था. सो इट वॉज नॉट दैट मच थिंग द सीरियस थिंग अकॉर्डिंग टू राइटर. But then the writer realized that actually for this kind of poor people, helpless people, they find this kind of things very much seriously, and that's why he realized that it was the kind of mistake. उन्हें ऐसा realize हो जाता है कि वो एक तरह की उनकी mistake थी. पर साहब की समझ में अभी ये कुछ नहीं आने वाला क्योंकि उसके लिए वो सारी चीज़ें बहुत ही न्यू हैं. That's why after months of knowing him, I ask him his name, Sahib Alam. He announces he doesn't know what it means. If he knew its meaning, Lord of the Universe, he would have a hard time believing it, unaware of what his name represents. He roams the streets with his friends, an army of barefoot boys who appear like the morning birds and disappear at noon. Over the months, I have come to recognize each of them. After a few months, when the writer knows him well, and then the writer asks his name. राइटर जब भी उसे पहचानने लगते हैं तभी कुछ महीनों बाद वो उसे उसका नाम पूछते हैं ये लड़के को. देन साहेब रिप्लाइज दैट साहेब आलम, उसका नाम जो है वो साहेब आलम है. एंड देन उसे पता है जो राइटर है कि ये वर्ड का मीनिंग, ये नाम का मीनिंग लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, पूरी दुनिया का जो भगवान होता है वो ऐसे वर्ड का मीनिंग होता है.
और वो ऐसे सोचते हैं कि अगर साहब को ये पता भी चल जाता है तो भी वो उसे बिलीव करने में काफ़ी हार्ड टाइम लग जाएगा, काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा, क्योंकि उसके लिए बिलीव करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा ना, क्योंकि उसकी रियल लाइफ और उसका ये जो नाम है उसमें कोई मैचिंग ही नहीं है, कुछ प्रॉपर थिंग्स है ही नहीं, दोनों के बीच में कोई मैचिंग ही नहीं है, वो पूरी तरह से पुअर है। सो हाउ कैन ही बिकम द लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, मीन्स उसका नाम जो है ऐसे कैसे हो सकता है। सो मे बी उसे ऐसे बिलीव करने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। Unaware of what his name represents, he roams the streets with his friends, an army of barefoot boys who appear like the morning birds and disappear at noon. Over the months, I have come to recognize each of them. ऐसे बहुत सारे जो उसके फ्रेंड्स थे, स्ट्रीट फ्रेंड्स, वो ऐसे आर्मी के थे जो ऐसे बैरफुट ही ऐसे चलते थे, मीन्स उनके पैरों में ऐसे चंपल्स या स्लीपर्स या कुछ भी शूज़ वगैरह नहीं होता था, एकदम बैरफुट ही वो लोग चलते थे। सो दिस बॉयज़ वर लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स, कि जो ऐसे सुबह को दिखाई देते थे, मॉर्निंग को दिखाई देते थे, पर नून टाइम पर वो डिसअपियर हो जाते थे। सो इट वॉज लाइक दैट, and the writer now is aware about all these people, this boys and Sahib Alam, all these people. The writer is very much aware about this. Next paragraph. Why aren't you wearing chappals? I ask one. My mother didn't bring them down from the shelf. He answers simply. The writer asks very much simply, a very normal question it was, that why are you not wearing actually the jumpers, because they were टोटली बैर फुट, नो दैट्स वाई उन्होंने चंपल्स शूज़ स्लीपर्स कुछ भी पहना नहीं था अपने पैरों में, इसलिए द राइटर जो है उन्होंने ऐसे पूछा कि आप लोगों ने ऐसे क्यों चंपल्स नहीं पहने हैं। एंड देन ही रिप्लाइज वेरी सिंपली दैट उनकी जो मदर है उन्होंने उसे शेल्फ में से निकाल नहीं दिया था, इसलिए उसने ऐसे चंपल्स नहीं पहने हैं। So here, see, how is the reason actually? That's very silly and simple reason. This boy is very much innocent. He has no idea about the importance of his jumpers, shoes and all. So it's very complicated somehow that how kind of life they are living. So that's strange. Next paragraph, let's see. Even if she did, he will throw them off, adds another who is wearing shoes that do not match. Even if she did, he will throw them off, adds another who is wearing shoes that do not match. When I comment on it, he shuffles his feet and says nothing. I want shoes, says a third boy who has never owned a pair all his life. अनदर बॉय जो है वो ऐसे रिप्लाई करता है कि अगर उसकी मदर ने उसे शेल्फ में से अगर शूज़ निकाल भी दिए होते चंपल्स तो भी वो उसे नहीं पहनता। एक्चुअली दिस बॉय वॉज वियरिंग द पैर ऑफ शूज़, इट वॉज वेरी मिसमैचिंग बाय कलर, सो द राइटर मेड द कमेंट ओवर दिस shoes, and that boy was feeling hesitation little bit, and he was feeling shuffled also, and he was trying to hide the shoes, that mismatching pair of shoes, and he didn't say anything. उसने कुछ भी ऐसे बोला नहीं और अपने थोड़ा सा हेजिटेशन फील करके अब ऐसे उसे हाइड करने की ट्राई कर रहा था। और फिर जो थर्ड बॉय है वो ऐसे बोल रहा है दैट आई वॉन्ट शूज़, कि मुझे शूज़ की ये जो पैर है वो चाहिए, बिकॉज ही हैड नेवर ऑन अ पैर ऑफ शूज़ थ्रू आउट द लाइफ। उसने अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी एक शूज़ की पैर जो है वो कभी परचेज ही नहीं की थी। Traveling across the country, I have seen children walking barefoot in cities on village roads. It's not a lack of money, but a tradition to stay barefoot is one explanation. I wonder if this is only an excuse to explain away a perpetual state of poverty. Actually, it was not that kind of the lack of money, but this kind of people had made this pattern, the tradition not to wear the shoes, not to wear the jumpers, sleepers and all. इन लोगों ने सिर्फ पोवर्टी ही एक वजह नहीं थी, पर इन लोगों ने ऐसे
एक ट्रेडिशन बना दिया था, एक पैटर्न क्रिएट कर दिया था कि वो लोग कभी शूज़ पहनते ही नहीं थे. सो इट वॉज द काइंड ऑफ मैटर रिगार्डिंग पोवर्टी एज वेल. और अपनी पोवर्टी को छुपाने के लिए, उनका एक्सक्यूज़ दिखाने के लिए एक अलग ये ट्रेडिशन इन लोगों ने क्रिएट कर रखी थी. सो द राइटर इज़ नाउ अवेयर अबाउट ऑल दिस थिंग्स. द चिल्ड्रन village who are there walking on the village road. So this are the children who are habituated actually to walk barefoot. ये वो बच्चे हैं जिन्होंने पूरी अपनी आदत ही है ऐसे barefoot ऐसे घूमने की. So here it is a discussion about this thing. Right now we are not going to complete this entire portion in this lecture only. अभी हम पूरा पोर्शन अभी तो हम कंप्लीट नहीं कर सकते इस लेक्चर में. Okay, so students, your today's homework is that you will complete the reading portion of this first part, right? And you will mention, this is now the next one is your writing homework. Okay, अभी मैं जो आपको बोल रही हूँ वो आपको रिटर्न में लेना है. Okay, so that is the question that you will describe the financial condition of this village people, especially this children who are playing on the street area, and the conversation between Saheb and the writer, and why did writer feel the mistake. Okay, writer को अपने mistake कैसे पता चलती है. So these things you have to mention. So this is your homework, right? Reading also you have to complete at your home. Personal study also should be there. That's why. Okay, suppose you are going to find any kind of difficulty, then I'm always with you. Okay, so you can ask me anytime. So take care of your health, students, and thank you. Have a nice day.